दरअसल इसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। ये किरण जी और अन्नू जी और मामी के जितने लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब उनकी मेहनत है कि दुनिया भर से अलग अलग फिल्में आती हैं यहाँ और एक मौका मिलता है मुंबई के लोगों को वर्ल्ड सिनेमा देखने का। तो ये उनकी मेहनत है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच सीक्रेट सुपरस्टार। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि मैं इतना बिजी रहा हूँ रिलीज़ के सिलसिले में कि हम लोगों को मतलब मुझे पता भी नहीं है कौन सी फिल्में इस साल हैं मामी में, और मुझे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म 19 को लग रही है, तो इस दफ़ा मैं एक भी फिल्म नहीं देख पाऊँगा। जी, so I would definitely like to say I'm very excited to be here, very proud to be here because you have renowned film festivals all over the world. You have Sundance, you have Cannes Film Festival, but this is such a prestigious film festival here in the heartland of India. It's the Mumbai Film Festival, so we're very, very proud to be here. And Anupama Chopra ma'am is a very close member, part of a close friend of our family. Known her for many years, so she's hosting this evening. So very happy to be here. I'm very honored to be here. हमारा फिल्म फेस्टिवल है, तो बहुत एक्साइटेड हैं और पहली बार आ रहे हैं मामी के लिए, तो हाँ। हमारी पिक्चर भी इस साल ही रिलीज हुई है, तो इट्स जस्ट वेरी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी हियर डेफिनेटली। पहले तो सभी को प्रणाम, नमस्कार, सलाम। एक्साइटमेंट तो हमेशा रहता है। एनीथिंग दैट अनुपमा जी और किरण जी करती हैं तो अच्छा ही होता। अच्छी फिल्में आएंगी, अच्छे लोग से मिलेंगे, क्रिएटिव लोगों से मिलेंगे, बाकी बिंदास, बाकी भी देखें क्या होता है। मैं आज लद्दाख जा रहा हूँ, रात को लद्दाख जा रहा हूँ बिड़ू। अभी लद्दाख जा रहा हूँ तो कोई फिल्म देखने का चांस कम है। हाँ, शूटिंग पलटन की, पलटन आर्मी का ही होगा ना बाबा, आर्मी ऑफिसर का। फैबुलस यार, बहुत अच्छा लगा दिल को। बच्चे दोनों अच्छे, दोनों नीयत साफ है, दोनों अच्छे बच्चे। It's a pleasure. Good luck to mommy. सब एक साथ है। नर्वस भी हो, एक्साइटेड भी हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इंडिया गोल्ड, बहुत सारी मूवीज है। स्क्वायर है, लवलेस है, आज सुबह की बॉडी एंड सोल वो भी मिस हो गई। बहुत कुछ देखा है। You will be in conversation with Monica Bellucci. People are looking forward to that conversation. How will it be? How do I know how will it be? My question is, have you planned? I have planned a lot of questions and things. So we'll see. वो तो जब होगा तभी बता सकते हैं ना. We are looking forward to it. अरे अभी प्लानिंग थोड़ी ना बताई जाती है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। पटाखे मत फोड़ो। अब बाकी मामी तो एक ही फेस्टिवल है बॉम्बे का, जिसके लिए हम सब लोग वेट करते हैं। अच्छी बढ़िया फिल्में आती हैं, इतना बढ़िया क्यूरेशन होता है फिल्मों का। या इंटरनेशनल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सर, आज एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई, तलवार हैव बीन एक्विटेड, तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे? या आई थिंक इससे बड़ा एक सिनेमा की विजय नहीं हो सकती है कि एक फ़िल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और जो हम लोग चाहते थे, जो कि इतना बड़ा वर्डिक्ट आया है। वी आर सो हैप्पी फॉर द फैमिली एंड फॉर द पेरेंट्स। हालांकि जो 9 साल उनके उसमें गए हैं, उन 9 सालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर जो ये हुआ है जस्टिस, आज ये बहुत बड़ी हमारे पूरे जस्टिस की, इंडियन जुडिशरी की बहुत बड़ी विजय है। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके फिल्म के माध्यम से अवेयरनेस भी हुआ है? आई थिंक उसने लाइमलाइट में तो लाया वो चीज़ें जो नीचे सरफेस के नीचे थी, उस सरफेस के ऊपर आई।
जो इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि डाउटफुल थी। तो फिल्म में हम लोगों ने बहुत ही न्यूट्रल एक स्टांस लिया था, हमने किसी की साइड नहीं ली थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में था और जो भी दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किया था, हमने वो जैसा का तैसा दिखाया है। फिल्म कनेक्शन, डीप दिल्ली कनेक्शन। जी, What are you looking forward to from the festival this time? as always, looking forward to seeing some good films, We'll have to look meeting somewhere in the friends. middle, they're saying. हाँ, sorry. So, Center, and what films are you looking forward to? Any special category? Well, actually, I haven't been able to go through the full list of films. Unfortunately, हमारी खुद की फिल्म का prep चल रहा है तो ज़्यादा time नहीं होगा. लेकिन as usual, I think Mami has a good lineup of films, and as the days progress, we'll be able to catch some good films. Namita, what about you? Well, he's on prep and I'm on my post-production of Manto, so I'm also in the middle of things, but I'm looking forward to it. In fact, from the organizers, I've got a really sort of shortlisted list of the best films across sections. So I think they have a really interesting lineup. Tell us more about Manto. How is it shaped up, and how happy are you? Well, if you ask a director how happy you are after a film, it's a tricky one. But I just know it can't get any worse. It can only get better when you're in the post-production. Editing is my most favorite part of the journey, because all the mistakes you have done, now you're trying to, sort of make it better. It's been an incredible journey. A lot of Manto-esque people have been part of it, and great cast, great crew. So yeah, watch it next year. Hopefully by mid next year, it should be in the theatres in Liberty. A word on Nawaz and Rasika. They're both wonderful, honestly. I mean, they're both very accomplished actors, wonderful human beings, because when you spend so much time with actors, you also want to work with good people. So I feel very fortunate that they have fully dedicated themselves, and they're real troopers. Sir, 83 की बाकी स्टार कास्ट के बारे में कुछ बताइए. अभी बाकी स्टार कास्ट नहीं हुई, सिर्फ रणवीर को कास्ट किया है एज कपिल देव, एंड अभी ऑडिशंस चल रहे हैं. बहुत बड़ा कास्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि 11 लोगों को कास्ट करना है, और सिर्फ हमारी टीम नहीं. डोंट फॉरगेट, आप टू कास्ट विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉर्ड, इमरान खान. बहुत बड़ी कास्टिंग है हमारे सामने. Will it be known faces, all of them? Or We don't know. We are going for actors. We are going for people who can do justice to the roles of these icons. I think when you're doing historical characters, I mean, how they look becomes also equally Absolutely. important. So They it's a need tough to thing. embody the spirit of those Embody the people. spirit of it. will it be that rare film which will be completely male-centric? Couldn't see any female characters? No, I don't think so. I think it's a story about the triumph of the human spirit. I think it will be accessible to everybody. It's not, I don't think any good sports film is about the sport. It's about the spirit of the sportsman. In terms of actors, we don't. Oh yeah, needless to say, I mean, it's not the Women's Cricket World Cup. It was the Men's World Cup. So yeah, they are good. For any female. No, there will be. There is, of course. I mean, there's always the better half who supports Without them. women, it's not going to happen. And there's some brilliant stories about them, about Kapil Dev's wife, about Sunil Gavaskar's wife, Madan Lal's wife. So some very nice, interesting human stories behind the whole game that you're going to see. Okay, thank you, sir. Thank you. Diwali wish, sir. Diwali wish, sir. Here's wishing all the viewers a very happy Diwali. Diwali Mubarak. Diwali Mubarak sabhi ko. Wishing you all a very happy Diwali. Thank you. रितेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है यार, इस चीज़ के बारे में बताइए. इसके बारे में बताओ. नहीं, Okay. ठीक ही लग रहा है सब कुछ. थैंक यू सो मच. हेलो हाउ आर यू? Sir, Mami कितना special है इस time में? What are you looking forward to? आई थिंक मामी इज़ ऑलवेज बीन स्पेशल, और जब से नई टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, आई बीन पार्ट ऑफ दिस टीम एज अ ट्रस्टी, एंड आई एम हैप्पी that under the guidance and leadership of Kiran Rao and Anupama Chopra and Miss Sunita Ambani, ये इतना आगे बढ़ चुका है, और अभी एक इंटरनेशनल स्तर पर इसका एक मकाम धीरे धीरे we are achieving that. Sir, is this the great Chhatrapati Shivaji Maharaj look that you are? No, yaar, it's just growing right now. Okay. So we'll see more of that. Slightly more, yes. Is that what you're shooting next immediately, or what are you currently busy with? Currently I'm busy promoting my Marathi film Faster Fene, and post that I will start working on 2 more Marathi films. That would be Chhatrapati Shivaji Maharaj is one of them. आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. Be safe and happy Diwali.
I'm actually really excited. I've always been, tried to associate with Mami, from for the last 2 or 3 years now. And my friends Kiran and Anupama. So it's a really great initiative, and I'm looking forward to the films. I've just read the lineup of films, and I'd like to go watch some of them. It's a really exciting festival to be part of. So I'm happy. Thanks. Nikhil Kampi. Well, we finished shooting, and I'm really looking forward to that film as well because it's a very interesting story and a true story. So it's an important story to be told, and I think we're releasing sometime soon, around Feb. So looking forward to that. Great experience. It was really fun working with him. He's very down to earth. He's very friendly and very he's really fun on set. So it was great. Well, I want to say Happy Diwali to everybody and have a really safe, fun Diwali, and try and be as eco-friendly as you can. But Happy Diwali. Thank you. Hello. Hi. Thanks, yeah. Very much excited, yeah. I love Mami Festival. There's a few films I want to see. There's Mother. There's a film called Sunshine. There's of course the Iram Haq film, which I absolutely love. I've already seen it in TIFF, but I'll see it again. It's called Log Kya Kahenge? Yeah, What Will People Say in English is the title. So yeah. Promotions are really hectic. I just ran from promotions today for GRGA. It's a lot of fun. It's coming out 27th October. जी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मामी फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर अलीगढ़ थी, इस साल मेरी फिल्म इन द शैडोज़ है और सामने वाले हमारे पत्रकार महोदय को बड़ा मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही है मुझे देख करके और बहुत अच्छी बात है कि मुझे देख करके कुछ लोगों को हंसी भी आती है। हाँ, I'm looking forward to the screening of my own film In the Shadows Gali Guliyan, which will be happening on the 14th, 16th. There are 4 screenings, and 16th is the screening which will be happening at PVR Andheri, where we'll be there for the question and answer also. Sir, anything more about the film? What kind of a character will we get to see you playing in it? More we'll talk about it when we meet all of you at PVR on the 16th, okay, In the Shadows, which is an international film, and it is in Busan this year, Chicago, there are many other places it is going to be shown. Sir, Aligarh was such a critically acclaimed movie. Regret missing that in missing the race for the Oscars, probably it should have been India's opportunity, or how do you look at it? It was last year, so Aligarh was last year, so you just missed the point. रुख को हमने डिसाइड किया था कि हम सीधा बिना फेस्टिवल भेजे हुए उसको सीधा रिलीज़ करेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द ट्रेलर इज़ डूइंग creating quite a buzz. The songs are doing very well. I just hope that everybody goes in the theatre and watch the film. बहुत सारी शुभकामनाएं सब लोगों को दिवाली की, खुश रहिए। हाय मैं मनोज सर को बुलाने जा रहा था शादी के लिए, उनको भूल नहीं पाया था। यस, कैसे चल रही शादी की तैयारियाँ? चल रही है, तैयारियाँ अच्छी चल रही है यार। बहुत ही मतलब शादी इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो बस शुरुआत हो गई है। बारातियों को तो हमने निमंत्रण दे दिया है, भेज दिया है, बस अभी बाकी तैयारियाँ चल रही हैं। मामी से तो मेरा बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। शाहिद हमने यहाँ शाहिद दिखाई थी सबसे पहले, फिर अलीगढ़ दिखाई,
तो मामी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ and I'm really glad, I'm very happy that we have a festival like Mami in our country and that too in our hometown in Mumbai. No, yeah, it's basically I've cut my hair for bows. I shaved it half. So till the time it grows back, I can't really, I have to use headgears. That's the only thing. I love making films. I think that's the best thing I love about filmmaking, about being on set, being in front of the camera. Promotions are part of the job. I'm not a big fan of promotions, but I know it's a part of the job, so I try and enjoy them. Hi guys, I'm Rajkumar Rao and wish you all a very happy Diwali. Thank you. I mean, the first thing I'm looking forward to is seeing the screening of Mukkebaz, Anurag's film. I haven't seen it. I'm really excited to watch that. Any sections that you're looking forward to, specifically Indian, international? No, international mainly, and the regional section in Indian films, because I don't get to see that often. So that is something I'm looking forward to. On Diwali, wish Oh yeah, happy Diwali and a prosperous New Year. Thank you. ये ब्रह्मास्त्र कितना धूम मचाएगा? ओह शिट, हम लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं आज। बहुत सारी बातें सोचा है। यार मैं क्या बोलूँ, इट इज़ मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। सो मेरी बहुत ख्वाहिश है, ऑल माई होप्स आर ऑन दिस फिल्म। आई होप कि सबसे बड़ा धूम मचाए ये फिल्म। You feel so? I do think so as well. I'm very excited about the cast, but I hope that the film is even bigger than the cast. And I hope that they've all come together because of the story of the film and the theme of the film. It's somewhere down the line a superhero film, right? So do we get some special costumes, actors, how's it going to be like? Very quickly, I may not be able to give you this information properly right now. The film is a modern day film. It's set in India as it exists today. But the reason the film is called Brahmastra is because the energies, the wisdom, the powers in the film come from ancient India. That's all I'll say right now. There are some costumes, maybe not the way that you would expect them to be. Mami kitna special rahega is saal aapke liye? What are you looking forward to? Mami is very special for me. Before anybody knew me in films, I used to come and watch films at Mami. So I'm very excited about the festival. And ever since Kiran and Anu have taken over the festival, the curation has become really good. So I hope that I can take time off from work to watch lots of films. मेरे list पे बहुत ही ज़्यादा films हैं. कैमरा में ये सवाल मैं यहाँ पे देख के दूँ. Listen, what do I say about Amit ji? It is a great honor for me, as it would be for any filmmaker, to be working with him in his 75th year especially. That's all I'm going to say right now. Yes, there's a lot of time to talk about his role in the film. Ever since the film was conceptualized, I wanted to approach him for the film and make the film with him. So I'm very happy that he's a part of Team Brahmastra. Done? Diwali wish? क्या किसको बोलूँ? आप सबको हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट दिवाली. आई एम श्योर वापस मिलेंगे दिवाली के टाइम पे कहीं ना कहीं पे. भागू, सी यू. Heroine of Ranchi Diaries, that's the director of Thank you. Sir, सबसे पहली बात तो congratulations. It's such a huge responsibility given to a person who really deserves it. Thank you. I'm very happy to be the chairman of FTII. It's a great honor. It's a very humbling experience. But I'm today very excited to present my team, Saundarya, and I wish her great luck. Satvik, it's his first film. We are very happy. It's releasing tomorrow. And 36 years back, I saw dreams of becoming somebody, and it's time for their dream to come true. I'm very happy. And Mami is a great festival. It celebrates brilliance. It celebrates excitement of cinema, and I'm very happy to be part of Mami. I'm very happy to come here with the team of Ranchi Diaries. Hi.
It's wonderful, and actually when I drove into Liberty, so many memories came alive because my first feature film Kuch Kuch Hota Hai was released in Liberty. So the venue, the location is also a big part of my film history. Mukkabaz, I am really excited to see it. Anurag always does such great work and he's always breaking ground. So I hear this film is spectacular and I can't wait to see it. मैं अनुराग के साथ काम कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उनका जो स्कूल है सिनेमा का वो मेरे से बहुत अलग है, लेकिन अलग फिल्में बननी चाहिए, अलग किस्म के किरदार निर्देशकों को प्रेजेंट करना चाहिए और वही अनुराग करते आए हैं और हमेशा बहुत सक्सेसफुली करते आए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में उनका बहुत बड़ा नाम है एंड ही मेक्स अस प्राउड एवरीवेयर ही गोस। Well, it's going to be pretty much family driven. I'm very excited that it's Yash and Ruhi's first Diwali. पहली बार वो शायद हमारी दिवाली पूजा जो होती है वो आएंगे ऑफिस पे and it's a big moment for us and for the family. No, I'm going to only talk about Mami and nothing else. वेल मामी से मेरा बहुत ही मतलब जब से मामी शुरू हुआ है तब से मैं एसोसिएटेड रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर अगेन। मामी जो है ऑलमोस्ट एक बॉम्बे सिटी का एक कल्चरल जो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बनता जा रहा है एंड दिस ईयर ऑल्सो देयर सम अमेजिंग फिल्म्स ओवर हियर। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि जब भी मामी होगा आई ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम। थैंक यू सो मच। वेल आई बीन स्टाइल बाय संजना बत्रा और ये अन्ना विला का ब्यूटीफुल आउटफिट है। मैं आज जो ओपनिंग फिल्म है मुक्केबाज वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो टोरंटो भी गई थी एंड ऑफ कोर्स यू नो आई थिंक इट बी वेरी वेरी गुड फिल्म। जी अभी वापस भी जाना है मुझे शूटिंग खत्म करने, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फिंगर्स क्रॉस, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। I want to wish all the viewers a very very happy Diwali.